Hello, my dear friends. How are you? Welcome back once again to your favorite YouTube channel for the preparation of IPMAT and JIPMAT examinations for the year 2026. So friends, a very good evening to all of you. I hope I'm clearly visible and audible to every one of you. जल्दी से एक बार confirm कर दो those who are already there in this session if I am clearly visible and audible. Right. So friends, this is our next session for IPMAT Foundation Batch 2026, wherein we are discussing the basics, the fundamentals of the topics of logical reasoning and data interpretation. Now, if you remember in the last class, we have covered data sufficiency. That was something different. That was a different area, a different topic. And I'll say that, yes, it was different from the point of view that data sufficiency is different way in which the questions were asked, right? But the concepts on which data sufficiency question was based were the same. Now today in this next lecture, we are going to talk about data interpretation. Now data interpretation जो topic है ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. अभी तक जो भी हम एरियाज देख रहे थे, हमने कोडिंग डिकोडिंग किया, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस. हाँ, हमें ये पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आईपीमैट इंदौर में नहीं पूछे जाते, राइट? सो अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं अदर देन डेटा सफिशिएंसी, अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईपीमैट रोहतक एंड जिपमैट एग्जाम. ठीक है, राइट? बिकॉज आईपीमैट रोहतक और जिपमैट में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन अलग से आता है. Sir, which IIMs consider academic score in the final cutoff list? कार्तिक अभी इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? बट एक चीज सोचना यार, लाइक अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी IIM कंसिडर नहीं करता अकेडमिक्स को, तो क्या आप अकेडमिक्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे? आप अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे, राइट? तो ये चीज नहीं करनी है. Because some of the IIMs, yes, they do give weightage to the previous academic track record. So 12th marks का 12th boards का जो score है ये बहुत ही ज्यादा important है. And ये सिर्फ IIMs में admission के लिए important नहीं है, ये और भी काफी सारी जगहों पे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है? So irrespective of how much weightage any IIM will give to the academics, any IIM will give to your 10th and 12th board examinations, you must give your 100% towards your board exams, ठीक है? Now continuing to the thing जो मैं आप लोगों को बता रहा था, IPMAT रोहतक एंड जिपमैट में LRDI का सेक्शन अलग से होता है, राइट? सो वी कैन से दैट अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स किए, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दीज एग्जाम्स. बट आज का जो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोहतक एंड जिपमैट, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIM Indore, IPMAT Indore exam, right? You all know that IPMAT Indore में 5 questions आते हैं in the quant section. Now these 5 questions can be from logical reasoning or data interpretation. Like over the last 5 years, हमने देखा है 5-6 years का अगर आप IPMAT Indore का पेपर उठा के देखोगे, तो you will find 5 questions, and ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये एक सिंगल सेट में आते हैं, या तो ये 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के एक सिंगल टॉपिक पे होते हैं, और these 5 क्वेश्चंस आर ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. सो यस, डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द 3 एग्जामिनेशंस, IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक एंड जिपमैट एग्जाम, राइट? सो अगर मैं IPMAT रोहतक एंड जिपमैट की बात करूं, सो एवरी ईयर यू आर गोइंग टू फाइंड एटलीस्ट लाइक 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन. अब 4 क्वेश्चंस अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के आ जाते हैं रोहतक एंड जिपमैट में, सो 4 क्वेश्चंस आर अ लॉट, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं IPMAT इंदौर के एग्जाम में, तो 5 इज ऑब्वियसली मोर देन 4. ओके, राइट? सो रुचि देशमुख, यू आर सेइंग सर बट आई एम अ ड्रॉपर. तो ड्रॉपर हो तो क्या हुआ यार, 12th के मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है? अब 12th के मार्क्स जो आ चुके हैं अब वो चेंज तो कर नहीं सकते, ठीक है? सो अगर कोई भी IIM 12th के मार्क्स को वेटेज देता है एंड यू हैव अ लेस स्कोर इन 12th, तो आपको क्या करना है? आपको IPMAT एग्जाम जो अब रिटन एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है?
सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो एरिया है, ये जो लेक्चर है, ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? सो इन दिस IPMAT फाउंडेशन, दिस टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? Data interpretation 1, and there will be one more session on data interpretation, that will be data interpretation 2. Now what will be the agenda of today's class? So today we'll be talking about the basics of data interpretation. थोड़ा बहुत हम basics cover करेंगे कि data interpretation में किस type के questions आते हैं, and data interpretation में क्या क्या चीजें use होती हैं, what all will have to do good in data interpretation. Then we'll be solving two different types of sets. अब यहां पे type of set क्या होंगे? Data interpretation होता क्या है? Some data will be given to you in the form of numbers, right? अब ये जो data जिस तरीके से given होता है, ये different हो सकता है. So the data can be given to you in the form of a table. It can be given in the form of line chart and bar charts, bar graphs, जो हम आज देखने वाले हैं. So 1, 2 and 3, it may be given in the form of a pie chart, right? So generally these are the ways in which the data can be given to us. These are generally 4 ways: table, pie chart, line chart and bar graph. Today we are going to look at two different type of questions, one in which the data will be given in the form of line charts and another in the form of bar graphs. अब लाइन चार्ट्स को किस तरीके से रीड करना होता है, बार ग्राफ्स को किस तरीके से रीड करना होता है, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अब हमें ये तो समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल सम डेटा विल बी गिवन टू अस. अब ये डेटा टेबल की फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ. सो द फर्स्ट हर्डल इज टू रीड द डेटा. ये जो डेटा सेट दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, उस ग्राफ में से वैल्यूज को पिक करना हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे वैल्यूज पिक करनी है, राइट? वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ दैट इज गिवन टू अस, देन कम्स क्वेश्चंस. अब जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज गिवन टू अस, एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर कैलकुलेशंस, राइट? सो दे आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस में क्या क्या कैलकुलेशंस यूज हो सकती हैं, आई विल टेल यू. सो द फर्स्ट and the foremost important thing that you must practice to do good in data interpretation is work on your percentages. Okay, so quantitative aptitude में, quant में आपने percentages किया है, right? So revise each and everything that you have done in percentages, percentage calculations. Okay, then percentage equivalence of fractions. लाइक 1/2 कितना परसेंटेज होता है, 1/3 कितना परसेंटेज होता है. सो वुड यू ऑल टेल मी 1/2 हाफ को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 ये जो फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा? कैन यू प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू? Absolutely, nice. So it will be 50%. Okay, so I'm going to ask you a few percentage equivalents of fractions. 1/3 का जल्दी से लिख दो. Once you are done with 1/2, tell me what will be the percentage equivalent for 1/3. 1/3 का percentage equivalent कितना होगा? Karthik, Ruchi, Moonchild, all these students have given the answer. I want more number of students to involve in this process. आज की जो क्लास है, इसमें पार्टिसिपेट करो, रिस्पॉन्ड करो, तभी कुछ नॉलेज लेवल इंक्रीज होगा. सो 1/3 इज 33.33%. वेरी गुड. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं. 1/7. कम ऑन, टेल मी द परसेंटेज इक्विवेलेंट फॉर 1/7. anyone who remember it? 1/7. Yes, this is a live session. Okay, who are you? Learn with fun. So I could not see your name, but yes, this is a live session. Absolutely 14.28%, right? So likewise, you must remember percentage equivalence of fractions at this level, at least up till 20.
ओके, सो 20 तक के परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 and so on up till 1/20, right? So these things will help you in in saving your time, saving plenty of your time while doing the calculations. Okay, so this is one thing that is very important from the point of view of data interpretation. Now moving ahead, the next thing which is important is knowledge of ratios. Okay, ratios again it's a topic of quantitative aptitude. Percentages के बाद हम ratios करते हैं, right? So ratios play a very important role in data interpretation. बहुत ज्यादा heavy calculations नहीं होती ratios में, but you must understand कि एक ratio होता क्या है, ratio को calculate कैसे करते हैं, या फिर कोई भी एक given number है उसको एक particular ratio में कैसे divide करते हैं. So let's say I have a number 85. Okay, I have a number 85. You will have to divide 85 in the ratio of 9:8. 85 को 9:8 के रेशियो में डिवाइड करो. Let's say this corresponds to A, this corresponds to B. There are two numbers A and B whose ratio is 9:8 and their sum is 85. So what will be the value of A? What will be the value of B? All right, nice, good. मेरे को A और B दोनों का वैल्यू बता दो. Nice, good, perfect. So value of A and value of B कैसे कैलकुलेट करेंगे? If you have a proper understanding of ratios, so what I can do is the value of A will be the part of A in the ratio, which is 9, divided by the sum of these two numbers, which is 17, multiplied by the sum of A and B, which is 85. Okay, so I can say that A will be 9/17 times the sum of A and B, right? So if we'll calculate this, it will come out to be 45. And similarly, B can be calculated, which will become the part of B, which is 8, divided by the sum of these two parts, which is 17, multiplied by the total of A and B. So 8 divided by 17 multiplied by 85, this comes out to be 40. Okay, so these are some basic things that we must know, like obviously about ratios to do good in calculations, to do good in data interpretation. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सबको लगता है कि हमें रेशियोज के बारे में नॉलेज है. डेफिनेटली नॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको परसेंटेजेस के बारे में पता है, आपको रेशियोज के बारे में पता है, और जो तीसरी चीज अभी मैं बोलने वाला हूं उसके बारे में भी सबको पता होगा. द ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग टू सॉल्व सच केसेस, सच क्वेश्चंस. कितना टाइम लग रहा है मुझे? क्या मुझे 15 सेकंड लग रहे हैं कैलकुलेशन में, या फिर मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं कैलकुलेशन में? क्या मुझे 30 सेकंड्स लग रहे हैं या फिर 5 सेकंड्स लग रहे हैं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम एम आई टेकिंग टू डू अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन. कैलकुलेशंस इजी हैं, राइट? हम कैलकुलेशंस कर लेंगे. इनफैक्ट IPMAT रोहतक, IPMAT इंदौर, IPMAT जम्मू, जिपमैट का एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम इजी हैं, राइट? अगर मैं आपको 24 आवर्स दे दूं एक पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, राइट? द पेपर विच वी हैव टू सॉल्व इन 2 आवर्स, 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, राइट? अगर मैं यही पेपर में आपको मैं 24 आवर्स दे देता हूं कि भाई पूरा दिन है, आराम से स्टार्ट करो, कल सबमिट कर देना, परसों सबमिट कर देना, आप बोलोगे यार पेपर तो बहुत इजी है. द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन द टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल, राइट? सो वही चीज जो आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स में आपको इजी लगेगी, अगर मैं आपको 2 घंटे में करने के लिए बोलूं तो वो आपको डिफिकल्ट लगेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस परफॉर्मिंग in those pressure environment when the clock is ticking. घड़ी टिक 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 करके टाइम कम होता जा रहा है, right? So in less amount of time you'll have to attempt more number of questions. Okay, so at these places, like understanding, not only understanding but performing these calculations quickly is important. Okay, ठीक है? तो प्रैक्टिस से ही यार स्पीड इंक्रीज होगी. The third thing that I'm talking about is knowledge of averages.
ओके, सो एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिख दो, मीनवाइल आई एम आल्सो राइटिंग इट। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ डू आई कैलकुलेट एवरेज? सो एवरेज इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ एवरेजेस, राइट? ठीक है, बट सिंपल फॉर्मूला है, कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, बट कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, परफेक्ट। चलिए, so these are certain concepts that you will have to I would say practice and be perfect at. Okay, चलिए, so आज की क्लास के जो दो सेट की बात कर रहा हूं, आज की क्लास के जो दो सेट हैं वो स्टार्ट करते हैं। So first of all I'll give you a question which is based on line graphs. ठीक है, so this is how a line graph looks like. Okay, अब लाइन ग्राफ में अभी आपको डायरेक्शंस भी मिलेंगी कि यहां पे डेटा क्या दिया हुआ है, बट स्टिल जस्ट बाय लुकिंग एट दिस लाइन ग्राफ व्हाट ऑल वी कैन अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्ड लाइंस, ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर्ड लाइंस, एंड नीचे यहां पे इनको रीड करने का तरीका दिया हुआ है दैट ब्लू कलर लाइन इज मैनेजर, रेड कलर लाइन इज टीएल्स, टीएलएस लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, and green color line is freshers. All right, so it may be that they have given A, B, C, D and E, 5 parameters, 5 companies can be there. Company A, number of managers is 125. Company A, number of managers is 125, which is given by blue color. Number of TLs which is given by red color is 295, and green color से freshers दिया हुआ है, that is 330. So it may be possible that this data is about the number of employees in 5 different companies A, B, C, D, E, right? ठीक है, so are we easily able to pick up the data from this line graph? अगर मैं B की बात करता हूं, 110, 240 and 450 is the respective number of managers, TLs and freshers. All right, ठीक है, so are you all easily able to understand this data? Yes or no? जल्दी से लिख दो yes या फिर no. All right, wonderful. अब डायरेक्शंस ऊपर गिवन है, the line graph given below shows the number of managers, number of TLs and number of freshers working in 5 different companies A, B, C, D, E. So this data is about 5 companies A, B, C, D, E. In each company, this line graph gives us the number of managers, number of TLs and number of freshers. That's it. Important. ठीक है, अब एक important चीज है, if I'll ask you what is the total number of employees in A, you can add these. Okay, total number of employees in company A, you can add these three numbers, right? No, this is not the total number of employees, right? एक कंपनी में मैनेजर्स, टीएल्स और फ्रेशर्स के अलावा भी तो और लोग हो सकते हैं, तो यहां डेटा में कहीं नहीं लिखा है दैट in any company total number of employees is equal to the sum of managers, TLs and freshers, right? So इन तीन डेजिग्नेशन के अलावा और भी तो डेजिग्नेशन हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट अगर आपको लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैनेजर्स प्लस टीएल्स प्लस freshers, then yes, you can add these three numbers to find out the total number of employees in any company. All right, ठीक है, तो अपनी तरफ से assumption नहीं लेना है, जितना डेटा दिया हुआ है उसी पे ही स्टिक रहना है, उसी पे ही अटक के रहना है, राइट? अपने तरफ से कोई assumption नहीं करना है। डन? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। So the first question based on this graph यहां पे मिलेगा आपको। So the first question on your screen with options as well, right? So have a look at this question and tell me which option among these 5 given options is correct.
So question is, if the total number of employees in company B and D are 960 and 1050 respectively, then what is the difference between the approximate percentage of their TLs? So go ahead, do the calculations and tell me what your answer will be. Option A, B, C, D or E. And guys, make a note that you will have to calculate the approximate value. Okay? So they are asking what is the difference between the approximate percentages of their TLs. All right, so Ruchi has given an answer. Ruchi says option C is correct. All right, Ruchi. So I'll come to the discussion in a few more seconds. Yes, people, anyone else who would like to comment upon the answer? Answer kya hoga? 6%, 9%, 10, 8 or 12 percentage? Yes, tell me which among these 5 options is the correct answer. So only one student, up till now only one student has given an answer. Karthik has also given the answer. Karthik says option E, that is 12. Okay. And Moonchild says option A. So option A, option C and option E. ये 3 options मुझे मिल गए हैं among the answers. All right. ठीक है, चलिए let's understand करना क्या है यहाँ पे. Now, total number of employees in company B is 960 and company D में कितने हैं 1050. So number of employees given है दोनों companies में, total number of employees for company B and company D, right? ठीक है? Fine. Now we'll have to calculate the difference between किन दो numbers के बीच में difference निकालना है. Difference between the approximate percentage of their TLs. तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टीएल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों कंपनीज में अलग अलग, एंड देन जो भी परसेंटेज आएगा मुझे उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि भाई करना क्या है इसके अंदर, राइट? तो एक एक करके चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टीएल्स इन कंपनी बी. ना कंपनी बी में भाई टीएल्स कितने हैं, कंपनी बी टीएल्स. So TLs is given by red color line. So company B के TLs कितने हैं 240 and then company D के TLs कितने हैं 350. So ये दोनों numbers पे mark कर दिया मैंने. So percentage of TLs in company B. So company B में percentage of TLs क्या होगा? Number of TLs in company B which is 240 divided by total number of employees in company B which is 960. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. ठीक है, अब इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव अ कमांड ओवर दीज फ्रैक्शंस. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस परसेंटेज इक्वल टू? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, कितना परसेंटेज आ रहा है? एनीवन? एब्सोल्युटली रुचि. सो दिस कम्स आउट टू बी 25%, राइट? अब इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, इट कम्स आउट टू बी 1/4
एंड 1/4 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है? इट इज 25%. ओके, सो परसेंटेज ऑफ टीएल्स इन कंपनी बी, percentage of TLs in company B is 25%. ठीक है, राइट? मूनचाइल्ड बेटा रुक जा, अभी देखते हैं क्या सही आंसर है. ओके, नाउ सिमिलरली कैन यू ऑल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ TLs in company D? I'm giving you 20 seconds for this. कंपनी D के परसेंटेज ऑफ TLs फाइंड आउट कर दो. ट्राई नॉट टू कमिट एनी एरर. ऑल ऑफ यू डू इट वंस अगेन. जिसने भी जो भी आंसर निकाला है भूल जाओ उसे एंड दोबारा से कैलकुलेट करो. सो परसेंटेज ऑफ टीएल्स इन कंपनी डी, कंपनी डी में टीएल कितने हैं? 350. 350 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच इज 1050. ठीक है, राइट? अभी इनटू 100 नहीं कर रहा मैं. इनटू 100 आई एम नॉट डूइंग इनटू 100. ओके, ठीक है. सो 350 अपॉन 1050 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो क्या आएगा फ्रैक्शन? आई वॉन्ट दिस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. 350 अपॉन 1050 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. सो फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करके तो ये कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस? 350 upon 1050 will come out to be 1/3. Now 1/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट आज हमने क्लास में किया है, इट इज 33.33%. राइट? अब मुझे डिफरेंस किन दो नंबर्स में कैलकुलेट करना है? 25% एंड 33.33%. इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 33.33 minus 25, this comes out to be 8.33%. Right? 8.33% should be my answer. And they are asking me to mark an approximate answer. Now, among the given options, which one is the most appropriate answer to mark? 8.33 है वैल्यू. इन सब में से सबसे appropriate answer कौन सा है? Definitely option D. Okay, so definitely option D. 8.33 is between 8 and 9, बट किसके ज्यादा पास है? 8 के ज्यादा पास है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, दैट इज 8. ओके, सो ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. जो भी आपने आंसर्स दिए ए, सी और ई, सारे के सारे इनकरेक्ट थे. द करेक्ट आंसर इज 8, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, सो सिंपल है सब कुछ, बहुत इजी है. आपको सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आंसर सही आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन द सेम डेटा एंड द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी हमने परसेंटेजेस यूज किया था, अब एवरेजेस यूज हो रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर्स इन ऑल द गिवन कंपनीज टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेशर्स इन ऑल द गिवन कंपनीज? सो डिफरेंस निकालना है एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ फ्रेशर्स. सो दो एवरेजेस आपको अलग अलग कैलकुलेट करने हैं एंड उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो टेक टाइम, टेक 1 minute, टेक 2 minutes, but make sure that you are going to give me a correct answer this time.
All right, so I have received an answer from Ruchi and Arjun and Moonchild, 3 students. This time I'm really happy to see at least the same answer. I don't know if this is correct or not, but same answer dikh raha hai mujhe. I'm happy. Okay, chaliye. Now, in this question, we just have to find out average. तो भाई time कैसे save करूं मैं? So let's have a look at 2 ways of getting the answer, 2 different ways. Okay. Now, one way is I'll simply calculate the average of both managers and freshers. Average निकालूंगा और difference देख लेंगे. Average के लिए क्या करना है? Sum divided by number of terms. तो पहले managers calculate करते हैं. Okay, so first of all, for managers का average. So managers given by blue line, average will be sum divided by number of terms. So let me add all of them. So 125 and 110, 235, 405, 405, 555, 560, 660, 690. 690 is the sum. Okay, divided by 5 will come out to be 138. So this is the average that I have received for managers. ठीक है? So managers का sum निकाला and divided by 5. 5 is the number of companies, number of terms, and this is the average for managers. Now same way I'll do it for freshers. Can you please write the average for freshers? So मेरी calculations थोड़ी सी fast है, मैं orally कर पा रहा हूं. आपको थोड़ा सा extra time लग सकता है, but this is a basic way of doing this. Okay, 330 and 450, 780, 780, 1180, 1250, 1650, 1950, 2020, 2030. So 2000 कितना आ रहा है? 2030 आ रहा है. अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 406. करेक्ट? ठीक है, एक बार प्लीज मैच कर लो मेरा ये आंसर सही है या फिर नहीं. सम मेरा आ रहा है 2030 डिवाइड बाय 5 किया तो 406. अब मुझे इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? सो 406 में से 400 में से 132 माइनस कर दिया, सो 268 is the difference, right? So 268 is the difference and the correct answer, yes, it is option B. ठीक है? This is one way of calculating this. ठीक है? Another way is मैं क्या कर सकता हूं? I can take the difference between these two. मुझे एवरेज निकाल के डिफरेंस लेना है, मैं डिफरेंस निकाल के एवरेज ले लेता हूं. सो 330 में से 125 माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 205. So 205 is the difference between these two. In all these cases, freshers are more than managers. So कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंस लेने में. So 330 minus 125 is 205. Then 450 minus 110, that is 340. 475 minus 170, it will be 305. 400 minus 150, it is 250. And 375 minus 135, that is 240. Okay, अब इनको ऐड कर देते हैं सिंपल तरीके से. So 250 and 240, 490. 490 and 300, 790. 800, 1100. 1300, 1340. So 1340 is the sum of these differences. अब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 268 आंसर आ जाएगा. राइट? सो दिस इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन. थोड़ा सा यहां पे मार्जिनली टाइम सेव हो जाएगा. इफ यू वांट इट यू कैन डू इट यूजिंग दिस मेथड एज वेल. ऑलराइट, so friends, this is the first set of questions, right, on line charts. अब थोड़ा सा change करते हैं gears को and let's talk about bar graphs. So this is a bar graph that is given to you.
अब बार ग्राफ को रीड करके डेटा क्या समझ में आता है? सो द डेटा इज फॉर 1 2 3 4 5 ईयर्स का डेटा है, 1990, 91, 92, 93, 94। ओके, यहां पे लिखा हुआ है ब्लू कलर इज जिम्नेजियम 1 एंड रेड कलर इज जिम्नेजियम ए एंड जिम्नेजियम बी। So A is with blue color and B is with red color. So it may be number of people who have enrolled or number of students who have who are there in gymnasium A and gymnasium B in these 5 years. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब वैल्यूज कैसे रीड करें? तो वैल्यूज कैसे रीड करें? ऑन द y axis I have 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ये वाली लाइंस विजिबल होंगी सबको। ओके, सो मैं इनको एक अलग कलर से मार्क कर देता हूं, लेट्स से रेड कलर से, आपको शायद विजिबल प्रॉपर्ली हो जाए। सो दिस इज 300, दिस इज 250, 200, 150, 150 एंड 0। ओके, मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? ये विजिबल है, परफेक्ट। नाउ ऑन द y एक्सिस 50 और 100 के बीच का जो गैप है, इफ यू विल हैव अ क्लोजर लुक, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ओके, सो मैं अगर 50 से ऊपर चलना शुरू करता हूं, लेट्स पिक दिस कलर। 50 और 100 के बीच का गैप 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 50 और 100 के बीच में कितना गैप होता है? 50 का गैप है। अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर देता हूं तो हर एक छोटा वाला जो गैप है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इट्स वैल्यू विल बी 10। सो इफ दिस रीड्स 50, 50 के ऊपर ये 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। ओके, एंड सो ऑन, यू कैन कीप रीडिंग ऑल दीज वैल्यूज वन बाय वन। एब्सोल्युटली 10 फॉर ईच। नाइस, ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, सो जिम्नेजियम ए की वैल्यूज निकालनी शुरू करते हैं। सो जिम्नेजियम ए 1990 में कितने स्टूडेंट्स होंगे? जिम्नेजियम ए में कितने मेंबर्स एनरोल्ड हैं? सो डेटा में गिवन है। सो जिम्नेजियम ए, कैन यू टेल मी, जिम्नेजियम ए 1990 में कितने मेंबर्स एनरोल्ड हैं? So this is 150, 160 and 170. So clearly visible, it is 170. So gymnasium A 170 in the first year. Second year में कितने? So quickly give me all the 5 values for gymnasium A. Gymnasium A की पांचों values जल्दी से लिख दो। All right, so I am starting with this. So 1991, the value reads up to 60, 60. Then 1992, it is 1 below 50, 1 below 150, that is 140, right? Then for 1993, it is exactly 200. And for 1994, it reads to 70. So these are 5 numbers, 5 values for gymnasium A. Similarly, I'll write all the 5 values for gymnasium B, the red color graph, the red color bar. So I'm writing all the values for B as well. Meanwhile, you can check the values for A. A का जो last value है रुचि, it is reading up to 70, not 80. So these are the 5 values for gymnasium A. Okay, right? Now talking about gymnasium B. So gymnasium B, I'm writing the values. So 240 for the first year, 210 for the second year, 160 for the third year, 240 for the fourth year,
and 150 for the last year. Okay, so these are my values for all of them. If these values are matching with your values, we can quickly start off with the questions. Okay, so values match कर रही हैं, दो students ने अभी आंसर लिखा है and these values are matching. So again data is readable. थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लाइन चार्ट्स पे हमें easily values लिखी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. यहाँ पे values were not written. We'll have to project these graphs, we'll have to project these bars on the y-axis. ठीक है, perfect. So डेटा क्लियर है, अब आपको बार ग्राफ की जरूरत नहीं है, आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं. So you can use those values to calculate the answer of question number 1. So in the year 1995 का डेटा गिवन नहीं है, 94 तक का डेटा गिवन है. So ये क्या बोल रहा है? In the year 1995, the number of members enrolled in both gymnasiums increased by 30% as compared to 1994. So find the total number of members enrolled in both gymnasiums in 1995. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन. All right. So most of you are saying option D is the correct answer. Let's check it out. So 1994 में what is the total number of members who are enrolled in both these gymnasiums? So I'll go back to the data. तो जो हमने डेटा पहले यहाँ पे बनाया हुआ था, so it says 70 and 150. ठीक है? So for gymnasium A and B together, year 1994 में 70 plus 150, total number of members was 220, right? अब 220 को मुझे इंक्रीज करना है कितने परसेंटेज से? 30% से. ओके, सो 220 का 30% कितना होता है? 220 का 10% इज 22. 220 का 10% 22 होता है, तो 30% कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 66. So 30% कैलकुलेट किया which comes out to be 66. So 220 को 66 से इंक्रीज कर दिया, 286 is the answer of this question. So 286, option D, absolutely correct. Okay, simple. So 220 multiplied by 130 upon 100 ये भी कर सकते हो. बट रुचि देखना, 220 है, इसका 30% ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, सो 220 का 10% होता है 22, तो 30% हो जाएगा 66. सो 220 प्लस 66 दैट इज 286. ओरली हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, अगेन द सेम डेटा एंड दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ओनली इफ यू हैव picked up the correct values from the graph.
Yes, people, any answer? You will have to find out the ratio here. So a ratio needs to be calculated. So find the ratio between the total number of members enrolled in both gymnasium in the year 91 to that in the year 94. So 91 में total number of members कितने enrolled हैं दोनों gymnasium के मिला के. So 91 में it is 60 for gymnasium A and 210 for gymnasium B. So 1991, the sum will be 60 plus 210, that is 270. In the year 1994, we have already calculated in the previous question. Still, ये कितना है 70 and 150. So 70 plus 150 in this gymnasium, that is 220. अब इन दोनों numbers का ratio find out करना है 270 is to 220, right? So answer is 27 is to 22, right? So 27 is to 22, absolutely correct. Okay. Now friends, you must be wondering कि ये इतने easy questions हैं. Now believe me friends, if you look at the previous year papers, you'll find questions easier than this. Okay, right? So this is the level of difficulty, but today whatever level of difficulty we have done, will be increasing the level of difficulty in the further classes. So these are foundation classes. ये मत भूलो ये foundation classes हैं. So we are just building up your foundation for these. Okay. प्रणय, hi sir, क्या super classes offline में आप सभी ही पढ़ाते हो? नहीं प्रणय, I do not teach. Like जो भी आपको online faculty मिलेंगे, the same set of faculty will not be there in the offline classes. ठीक है बच्चे? हाँ? All right. But believe me, you will find equally good faculty members teaching at offline places. Okay? Right? So you don't have to worry about that. All right. So friends, that is all from my side for today's class. A big thank you to all of you for being a part of this session. I'll see you in the next session of data interpretation of the foundation class. Data interpretation 2 अभी बचा है, उसमें हम tables and pie charts इन दोनों टाइप के डेटा को हैंडल करेंगे. राइट? सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम. I'll see you again. Bye bye.